So because she performed formidable act or ascent, so because of that she was ascent, not Dita. Then what happens? Adhomukhi. Adha means down. Upri adha. Upri means upper, adha means down. So adhomukhi means the face lowered. Then what she did, जब उसको पता चला कि उसने कुछ गलत काम किया है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, ऑटोमेटिकली फेस डाउन हो जाता है if you do some wrong activity. It's not going down मतलब some big problem है. And उपसंगम्या. उपसंगम्या means संगम्य means sun. उपसंगम्य means went to near. To whom? Vipra Rishim, to the Brahmana Rishi, who is a Kashyapa. Then Abhyabhashata. Bhashata means speaking. Abhyabhashata, politely she started speaking. So here we see, or we'll be seeing further, कि जब दिति ने गलत समय पे अपने हस्बैंड कश्यप मुनि को परस्यूट किया फॉर रॉन्ग एक्ट के लिए, और इवन दो ही वाज नॉट इंक्लाइंड, शी फोर्स्ड हिम टू डू सम फॉरबिडन एक्ट, जो कि फॉरबिडन मीन्स विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द शास्त्रास. Generally, one may say, what is the wrong? She is a wife and husband, yet they unite. What is the wrong? No. But even though they are wife and husband, but still there is some regulation is given. One place is, why regulation is there? When you want to regulate something, means something wrong. It's not right thing. So when we say regulate your smoking, don't smoke here and there, so many things, but it's not actually good. But one cannot avoid completely. पूरा नहीं छोड़ सकते हैं, तो कुछ रेगुलेशन दिया. किसी भी चीज को रेगुलेट किया जाता है, इट्स नॉट गुड फॉर यू. सो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि sexual thing is not really required for the body. हमने एक क्लास में डिस्कस किया ना, खाना जरूरी है, खाना पीना. बिना खाएंगे हम नहीं और पिएंगे नहीं. Without eating and drinking we'll die, but without sex we can live. So the regulation is given for certain things which is not required, but one cannot live immediately, so that some concession is there. So यहाँ पे दिति को जब गलत काम किया, तो उस समय सेंसेस वर अनकंट्रोल्ड. एंड कभी कभी होता है ना कि हमको हमारा लॉजिक फेल हो जाता है सर्टेन टाइम, व्हेन सेंसेस आर टू एक्साइटेड. हमारी इंद्रियां हमको ओवरपावर्ड कर लेती है. अकॉर्डिंग टू भागवत गीता एक हायरार्की है, कौन किसको कंट्रोल करता है. तो सबसे ऊंची आत्मा है, आत्मा को कंट्रोल करना है. बट सम टाइम हमारा बुद्धि और इवन हमारा मन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आत्मा, बुद्धि, बुद्धि के बाद मन, मन के बाद शरीर होता है, हमारी इंद्रियां होती है, बहुत इंद्रिया. तो किंतु हमारा मन कभी कभी इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बुद्धि की बात सुनता नहीं है. तो एनीवे, तो गलत काम कर दिया, पर करने के बाद दिति को रियलाइज हुआ कि आई हैव डन द ग्रेट मिस्टेक. सो दिस इज आल्सो साइन ऑफ गुड इंटेलिजेंस. ठीक है, उस समय आपको पता नहीं, आप रोक नहीं पाए किसी कारणवश, बट करने के बाद यदि आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने कुछ गलत किया है, so that is little better,
ऐसा करना नहीं है, पर करने के बाद यदि आपको पता चला है तो रिपेंट होना है। एंड दैट रिपेंटेशन प्रभुपाद जी बहुत जगह बोलते हैं, और हम देखेंगे आज लेक्चर में कि रिपेंटेशन ऑफ फायर कैन बर्न द सिंफुल रिएक्शन ऑफ द एक्ट। रिपेंटेशन बहुत पावरफुल है, और जब हम रिपेंट करेंगे किसी भी एक्ट के लिए तो धीरे धीरे जो वो एक्शन है वो हम उससे और गलत जो हमारा एक्शन है, गलत जो हमारा हैबिट है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। यदि हम उसको लूज छोड़ देंगे, ठीक ठाक चलता है, देन इट विल गो ऑन फॉरएवर, वी कैन नेवर कम आउट। सो सम डिग्री ऑफ रिपेंटेशन, एंड रिपेंटेशन के लिए यू रिक्वायर टॉलरेंट कि माइंड ऑल्सो, पहली बात कोई गलती करते हैं तो वांट टू प्रूव इट इज राइट, और हम कहीं ना कहीं हमारा माइंड करप्ट माइंड है, तो हमारा लॉजिक रीजनिंग देने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट इज राइट। अब बहुत गलत स्टैंडिंग है कि टू प्रूव इवन दो ना हमने कुछ गलत काम किया है उसको सही प्रूफ करने के लिए। इवन इन द केस ऑफ, जब आपको पता होगा कि जब कुमारास बैकुंठ में गए तो 6 डोर पास करने का, साथ में जब गेट पे आए तो उनको रोका गया इनके द्वारा, जय विजय के द्वारा। तो जब रोका गया तो फिर बाद में दोनों के बीच में थोड़ा सा गर्मी हो गई, हॉट टॉक हो गई हमारे कुमारास और जय विजय के बीच में। तो फिर भगवान भागते ही आए, कुछ चल रहा है। तो भगवान जब आए तो भगवान ने कुमारास को क्या बोला, हम आपसे माफी मांगते हैं कि हमारे ये द्वारपाल हैं, इन्होंने आपको ऑफेंड कर दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आप उसके ब्यूटीफुल पर्पट्स हैं जो प्रभुपाद जी लिखते हैं उस अध्याय में, कि भगवान का जो बिहेवियर है, भगवान हमको बता रहे हैं कि किसी एक जेन्युइन आदमी को कैसे एक्ट करना है। ना जनरली यदि कोई सर्वेंट गलत करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गोस टू द मास्टर। सर्वेंट आर नॉट सो, उनको हम दोषी नहीं कर सकते हैं ज्यादा, उनके मास्टर को गलती जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे जो एक्शंस हैं, हमारा जो बिहेवियर है, इससे भी ऐसा होना चाहिए कि यहाँ तो लोग अल्टीमेटली प्रभुपाद जी को गलत बोलेंगे। He should be very, very spotless in that sense. तो जब भगवान आए तो भगवान का उसमें आप वर्सेस पढ़ेंगे। भगवान पहले तो माफी मांगते हैं और बाद में बोलते हैं आप जो भी पनिशमेंट देना चाहें आप उनको दे सकते हैं। और जय विजय का भी इतना बड़प्पन देखिए कि वो स्वीकार कर लेंगे, even though in generality there's no fault by Jai Vijay, but they are the impulse list, they are not allowed to enter. They were impulse list, they were not allowed. गलती भी नहीं है, फिर भी यदि किसी ने हमको पनिशमेंट दिया है गलती से, उसको स्वीकार कर। और जब जो कुमारा ऐसा देखते हैं और जब भगवान आके माफी मांग रहे होते हैं, कुमारा पागल हो जाते हैं। वो क्या रहे हैं कि जो सुप्रीम लॉर्ड, माय डियर लॉर्ड टू whom I worship, he is asking forgiveness. Then कुमारास का बहुत अच्छा श्लोक है उसमें, then he asks, "It is my mistake," है ना? So that's a way, क्योंकि जो बैकुंठ में और जो भगवान के धाम में है, कोई अननेसेसरी दे डोंट ब्लेम ईच अदर। यहाँ पे भौतिक दुनिया में क्या है, हमने भी शायद गलती की तो हम दूसरे पे थोपना चाहते हैं। तो बहुत दूर की बात है दूसरे की गलती को अपना गलती मानना, तो एक डिफरेंट डिग्री ऑफ प्योरिटी और एक
शुद्धता चाहिए, यदि गलती भी नहीं की है तो स्वीकार कर लेना। एनीवे, तो और क्योंकि माइंड है वो अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इसमें माइंड की तपस्या है। माइंड विल नॉट एक्सेप्ट सो इजीली। तो जो पेन होता है टू एक्सेप्ट, उसको हम तपस्या बोलते हैं। सो तपस्या बहुत जरूरी है हमारे आध्यात्मिक पथ पे, यदि हमको प्रोग्रेस करना है। सो एनी person who has a progressive path of devotion, he should learn 3 things: repentation, forgiveness, and tapasya. Repentation is not just think this, oh ठीक है हमने गलती हो गया है, that's not the repentation. Acceptance is not a repentation. यदि आपने एक्सेप्ट किया है तो वी हैव टू बी रिपेंटेंट। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे बता रहे हैं। आपको जड़ भरत का स्टोरी पता होगा कि जड़ भरत ने सब कुछ छोड़ के, यूथ यंग एज में सब छोड़ के आए, बाद में कैसे वो हिरण बन गए थे, क्योंकि उनको घर बार तो सब छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, किससे लगा हो गया? हिरण से लगा। देखो, he was so great in the youth age में, he left everything। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज सीखने को मिल रही है भागवतम में। लॉट ऑफ लर्निंग्स हैं, वी अंडरस्टैंड द किस वजह से, क्योंकि इट्स नॉट ए सिंपल स्टोरीज। ये सब कुछ छोड़ के आए और थोड़ा सा जो रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया। कई बार हमारा माइंड बोलता है व्हाट इज देयर, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय, जो शास्त्रों में दिए गए हैं, जो हमारे, तो कभी कभी हमको लगता है कि ना व्हाट इज द प्रॉब्लम, सिंपली राई का पहाड़ मनाया जा रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि मे बी इट दिस जंक्शन, यहाँ पे हम उसको सीवियरिटी कम नहीं समझ सकते। ओनली जो आचार हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हैं, बट वी आवरसेल्फ कैन नॉट। इसलिए बोला जाता है कभी आपको समझ में आए नहीं आए, अच्छे लगे नहीं लगे, आपको स्टिक टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरे व्यक्ति उत्पादाय करते। यदि हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे, कि हम रीजन तो बहुत सारे दे सकते हैं, इस कारण से हमने इसको फॉलो नहीं किया, इस कारण से, we can give n number of reasons, but that reasons is no value basis। यदि हम अंदर इच्छा है हमारे हृदय में, maybe body may not support sometime, but core of the heart is there, so we can build that muscles of that determination, confidence will help us to develop that kind of sincerity mindset. So that kind of sincerity is important. Now in this particular case, beautiful case Prabhupada is mentioning, the case of Bharat Maharaj, repentation comes in the mind of a good soul as soon as he commits something wrong। तो अच्छी आत्मा के लिए रिपेंटेशन बहुत जरूरी है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एंड श्रीला जीव गोस्वामी do not believe that the king's action was due to his past misdeeds. The arrangement was so made by the Lord just to call him back home. अच्छा, this is the case of Parikshit Maharaj। Sorry, Parikshit Maharaj। हिरण वाला केस है कि जब हिरण बन गए, और क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में क्या किया था, सेवा की थी भगवान की, बहुत उन्होंने
और जो मेडिटेशन तपस्या की थी, अगले जीवन में हिरण बन गए। फिर उनको याद था कि उन्होंने क्या मिस्टेक की है, उनको याद था कि वो हिरण क्यों बने, क्या गलती की थी। तो हिरण बनने के बाद जब इवन दो ही वाज लिविंग लाइक ए हिरण, ही लेफ्ट हिज होम, अपनी मदर हिरण को छोड़ के, देन ही गोज टू, वेयर ही गोज टू, पुलस एंड पुलह ऋषि के आश्रम। तो वहां पे भी वो उन्होंने थोड़ा सा संन्यास ले लिया, हिरण ने भी। तो या सो यहाँ पे हम देखें कि परीक्षित महाराज ने जब वो जंगल गए, प्यास लगी थी, शम्य ऋषि के आश्रम में गए, वो मेडिटेट कर रहे थे, उन्होंने पानी मांगा, पर वो बहुत डीप मेडिटेशन में थे जो भी था। तो वहां पे मरा हुआ सांप उनके गले में डाल देते हैं। फिर बाद में when he comes back, then he understands what mistake I did. और यहाँ पे हमारे आचार्य बता रहे हैं उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। एक तो जो भगवान का अरेंजमेंट था, इट्स ए प्योर डिवोटी, इवन द womb of his mother, उत्तरा के जब गर्भ में थे प्रहलाद वो परीक्षित महाराज, तो उन्होंने सुदर्शन जो ब्रह्मास्त्र आया था उसके ताप को सहन कर लिया था। What is this small trust? And also, he has seen the Lord in the womb. So he was a Mahabhagavata. He cannot do mistake. But sometime जब भगवान एक अरेंजमेंट करते हैं, बस उसी केस में जब मोहिनी अवतार हुआ था और शिव जी का दृष्टांत आता 8वें स्कंद में, तो जब मोहिनी अवतार हुआ समुद्र मंथन के साथ, तो शिव जी नहीं थे। बाद में उनको पता चला भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, मोस्ट ब्यूटीफुल फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो उनके अंदर में थोड़ा इच्छा हुई देखने की, तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान बोलते हैं थोड़ा वो वाला फॉर्म बताइए। भगवान थोड़ा मना करते हैं, और ही इंसिस्ट करते हैं। भगवान बोलते हैं एट योर रिस्क, हम आपको बता रहे हैं। तो वहां पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर परपट में लिखते हैं कि जो शिव जी का अट्रैक्शन था मोहिनी के प्रति, इज नॉट ए मटेरियल, इज ए, वहां पे इंटरनल एनर्जी काम कर रही है, इट्स नॉट ए एक्सटर्नल एनर्जी। तो कई बार it may look like what is this Lord Shiva is running, and also there's beautiful description actually how he took him to the different आश्रमों से लेके जाते हैं मोहिनी की। शिव जी भाग रहे हैं to embrace the Mohini, and a lot of learning in this how tolerant Shiv was there, even though he was seen as a lower position between the sages. Not see, takes her to the आश्रमों से लेके जाते हैं, शिव जी की running falling है, and यहाँ पे इंटरनल एनर्जी काम कर रही है, और भगवान यहाँ से स्थापित कर रहे हैं never you over confident, Maya can capture us anytime. So a lot of learning. So anyway, so यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं था परीक्षित महाराज का, फिर भी that is according to Srila Vishwanath Chakravarti, the plan was made by the will of Lord. By the will of Lord, the situation of frustration was created. The plan was that for his so-called misdeed, the king could be cursed by an inexperienced Brahmana boy, infected by the influence of Kali. Thus, the king would leave his hut and home for good. His connection with Srila Sukadeva Goswami would enable the presentation of great Srimad Bhagavatam, which is considered to be the book incarnation of Lord. Like in Bhagavad Gita में भी ना, अर्जुन तो भगवान के constant companion है, वो तो कभी भी he cannot be overpowered by illusion, but वो situation वहाँ create की गई थी so that Bhagavad Gita can be spoken, so that in general the people get benefited. यहाँ पे ऐसा situation create किया गया भगवान के द्वारा, so that
this book incarnation of the Lord can manifest, and by which everyone can get benefit out of it. So that is the so pure devotees' mundane frustration is meant to elevate the devotee. Sometimes devotee's frustration Lord gives for his elevation. So the devotee's mundane frustration is meant to elevate the devotee to the higher transcendental position. By placing Arjuna and the Pandavas in a frustration due to the entreaty of their cousin brother, the prelude of the battle of Kurukshetra was created by the Lord. This was to incarnate the sound representation of the Lord. Bhagavad Gita. So by placing Parikshita in an awkward position, the incarnation of Srimad Bhagavatam was created by the will of the Lord. Being distressed by the hunger and thirst was only a show. So the hunger and thirst was only a show, because the king endured much. Even in the womb of his mother, he was never disturbed by the glaring heat of Brahmastra, released by Sattama. The king's distress condition was certainly unprecedented. The devotee like Maharaj Parikshit are powerful enough to forbear such distresses by the will of the Lord. They are never disturbed. The situation in this case was therefore all planned by the Lord. भगवान ने तो भक्त होता है वो किसी भी सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होता, उसको पता है कि हमारे जो my dear Lord has created this particular scenario for my benefit. So that always we should remember in any condition. Accidental sins committed by a devotee are sincerely regretted. Accidental sins committed by a devotee are sincerely regretted, and by the grace of the Lord, all sins unwillingly committed by a devotee are burnt in the fire of repentation. If he sincerely repents, all things will be destroyed. To a devotee, any heavy punishment is tolerable. Devotee can tolerate any heavy punishment, but one which affect forgetfulness of Supreme Lord. So भगवान को विस्मृति के अलावा कुछ भी पनिशमेंट स्वीकार है यदि हम भगवान को याद कर सकें. इसलिए ना अपीतुल्या दर्शना नारायण पराशर ना कुतश्चिन विभ्यति स्वर्गा अपवर्गा नरकेषु अपीतुल्या. तो भक्त के लिए कोई भी सिचुएशन एक्सेप्टेबल है. सिर्फ भगवान को भूलने चाहिए, भगवान की सेवा नहीं जाना चाहिए. As long as I'm engaged in service of Krishna, that's the highest good. All are secondary. Mental, physical, it's all secondary, come and go. They're never stationary. But my service to the Lords of God. Although Bharat Maharaj received the body of a deer, by constant repetition, he became completely detached from all material things. He did not disclose these things to anyone, but left his mother deer in the place known as Kalanjara mountain. He was took by Kalanjara, where he was born. He again went to the forest of Shalgram and to the ashram of Pulastya and Pulharish. So even Hiran ke roop mein he great repented. How did this mistake? हम सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए थे इसके लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, और सिर्फ हिरण के साथ. कि अटैचमेंट आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है, क्योंकि हम कोई चीज गलत काम को करते हैं कि अटैचमेंट हो जाता है. ध्याय तो अविष्यान पुंसा संगस्ते जायते संग, और जब उस अटैचमेंट बढ़ जाता है तो उसको निकालने के लिए बहुत कष्ट होता है, जाता नहीं. इसलिए बोलते हैं अटैचमेंट होने से पहले उसको अलग कर दे तो बेटर. कि अटैचमेंट होने के बाद बहुत यहाँ पे तो परीक्षित, इवन भरत महाराज का जो केस बताएगा, इवन सच एक्सॉल्टेड सेज
जो अपना राजपाट पूरा महल सब कुछ छोड़ के आ गए, और यहाँ पे थोड़ा सा कंपैशन के कारण एंड आउटवर्डली लुक्स, इज इट ट्रू ना? उसका हिरण का बच्चा, उसकी माँ मर गई, कोई नहीं है, जस्ट टुक बर्थ, हु विल टेक केयर? एज ए मॉरलिटी ग्राउंड पे तो एक जेन्युइन है, बट ना he fell from his position. Even a devotee may sometimes commit some sinful activity, either knowingly or unknowingly, or due to his past sinful behavior. But if he sincerely repent, thinking, I should not have done this, but I am so sinful that I again commit this sin, Supreme Lord will excuse him on the basis of his genuine repentation. Repentation should be genuine from the heart. It's not a slip, sorry, I have done wrong. No. The core of the heart is to repent. However, if he intentionally commits sinful activity, expecting that the Lord will forgive him because he is chanting Hare Krishna, that is inexcusable. So repentation will be there when we generally will forgive when we generally repent. Genuine repentation will help us to progress and will help us not to commit, but even if we commit again, lesser intensity. धीरे धीरे हम उससे बाहर निकलेंगे. Having heard the conversation between, तो क्या होता है अजामला के केस में? क्या होता है, यमदूत आते हैं, फिर विष्णुदूत आते हैं, डिस्कशन होता है. बाद में पहली बार यमदूत को बिना किसी आज तक मतलब पहली बार ऐसा हुआ हम खाली हाथ जा रहे हैं, और जब जाने के बाद यमराज को पूछते हैं, अरे आपसे बड़ा और कोई, कैसे हम वहां गए थे लेने के लिए, मना कर दिया. तो फिर यहाँ उस कनेक्शन में बता रहे हैं, having heard the conversation between Yamdut and Vishnudut, Ajamla became firmly fixed in Krishna consciousness. He began to lament how unfortunate I was to engage in so many sinful activities. This is the proper attitude for a Krishna conscious. जब उनको पता चला तो अजामला लोग, अरे हम कहाँ पे, हम भगवान की सेवा कर रहे थे, एक थोड़ा सा हमारा डिस्ट्रैक्शन हुआ और हम एक प्रोस्टिट्यूट के पीछे अपना पूरा जीवन को खराब कर दिया. वैसे ही सेम हमारे उनको होता कि ना सौबरी मुनि, इतना ग्रेट योगी जो पानी के अंदर जाके और कर रहे थे तपस्या. तो फिश को देखा यूनाइट होते हुए, मन हो गया बाहर आके, नॉट 50 मान रहा था कि डॉक्टर से शादी की. थोड़ा करने के बाद उसको उनको समझ आ रही कहाँ फंस गए हम, क्या करने के लिए आए थे, फॉर व्हाट पर्पस आए, हम कहाँ. देन ही लेफ्ट एवरीथिंग. सो बिकॉज ऑफ दैट रिपेंटेशन, उसमें दिया जाए, उसमें बताया कि सौबरी मुनि को बैक टू गॉड. इफ नॉट ओनली ही, all the 5 wives of Saurabh, they all will go back to God. So this is the. So whenever, whatever he may have done in the past, no matter how sinful, when he comes in contact with devotee and hears transcendental topics in relation to the Supreme Personality of Godhead, Bhagavad Katha, he becomes purified and laments his previous condition. Indeed, the symptoms of his purification is that he laments having behaved so sinfully. He repents and discontinues his past previous conduct. And penance are nothing more than an attitude. पता ना हमारा कोई भी काम करे, हमारा एटीट्यूड क्या है. Bhagavatam shows how our attitude determines whether we live in spiritual or material energy. हमारा attitude define करेगा कि हम बाहरंग शक्ति के अंदर है
अंतरंगा शक्ति है। When Vidura tried to convince Dhritarashtra to return the throne to the Pandavas, its rightful heirs, Dhritarashtra threw Vidura out of his palace, which had been his home. घर से निकाल दिया ना, अब भगा देते। So Vidura decided to go on pilgrimage. Because of his love for Krishna, he accepted his new situation as a Lord's will. Srila Prabhupada said that in this instance, the Lord's material energy acted as internal and spiritual energy. तो यहाँ पे जब विदुर को ना, जब दुर्योधन, विदुर जी अच्छा एडवाइस दे रहे होते हैं किनको, धृतराष्ट्र को। अब जो हमारा दुर्योधन है थोड़ा सुन लेता है तो थोड़ा गर्म हो जाता है, अगर तुम हमारे घर में रहते हो, हमारा ऐसा करते हो, और हमको ही हमारे दुश्मन के बारे में ऐसा उसका फेवर के बारे में बोलना है, तो फिर उनको घर से धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं। तो विदुर उसको एक कृपा समझते हैं, ये हमारी स्पेशल कृपा, वहां पे भगवान की। Although Vidura could see that he had been mistreated, she also saw Krishna's blessings even in this. Sometimes you are mistreated, but you should take. Sometimes because of Krishna's energy is working, devotee never take it. Devotee take it as a blessing. Suddenly he was free of all political engagement and could seek out pure Krishna consciousness in a life of renunciation and devotion. तो उन्होंने कृपा देखा कि हम इससे हाथों से फंसे रहे थे पॉलिटिकल में, यदि वहां पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता, तो कभी कभी और बहुत समय भक्त के ऊपर जब दुख आता है तो वो उसके लिए बहुत एक अच्छे का काम करता है, क्योंकि वो उससे बाहर निकल सके। और तो यदि हमको रिपेंट करना है तो तपस्या बहुत जरूरी है। ये रिपेंटेशन तो होगा पर माइंड हमको अलाउ नहीं करेगा। सो प्रभुपाद जी एक अपने लेक्चर में बताते हैं, तपस्या मीन्स इवन वन इज अट्रैक्टेड ही शुड नॉट एक्ट। अट्रैक्शन विल बी देयर विद स्पेशली फॉर अपोजिट सेक्स एंड अदर थिंग, बट तपस्या मीन्स इवन वन इज अट्रैक्टेड ही शुड नॉट एक्ट। दैट इज तपस्या। माइंड विल पुट नो, so there may be some difficulty to control, but that should be practiced. It can be practiced. So यदि हम अच्छे से practice करेंगे, but so that will help us. So that practice is required. So if anyone faces difficulties, it is considered as blessings, because without tapasya or voluntarily accepting some inconveniences, nobody can realize the Lord. So when we are put into difficulties while discharging Krishna conscious duties, it is to be understood that Krishna puts us in a field of austerities and penances which help us making progress towards realization of Godhood. Haridas Thakur ji ko, so this is such a great acharya. He was beaten from the cane for the 22 marketplaces. So there will always be in this material world, we have to draw matras pasas Bhagavad Gita. You have to tolerate all plus minus will happen. That's the nature of this material world. So Haridas Thakur was beaten with a cane in 22 bazars, but he was never disturbed. Instead, he smilingly tolerated the beatings. Despite the disturbing dualities of material world, devotees are never disturbed at all, because they fix their minds on the lotus feet of the Lord, concentrate on the holy name of the Lord. They did not feel the so-called pains and pleasure caused by dualities. This material world is duality, has no meaning reality. जैसे हम बोलते हैं ना कि दुख सुख का कोई मतलब नहीं है, वैसे दुख का भी कोई मतलब नहीं है, both are illusory. Pleasure also, even the pain is also illusory. To train a new man is like training a wild animal to a pet. ना किसी को भक्त बनाना बहुत कठिन, इतना आसान नहीं है। माइंड इसका तो भी जंगली जानवर की तरह है। To train a new man is like training a wild animal to a pet.
just like the tiger is trained in the circus. Later on, they are dancing on the tune of custom. So the point being stress is training. Preachers should always be tolerant and we should be trained. Like Prahlad Maharaj बोलते हैं ना, sex urge is like an itching sensation. So tolerance is very important. Sex urge is a symptom of every living entity. But in Srimad Bhagavatam, it is advised that it is something like the itching propensity. If one can tolerate this itching, he can save himself from enormous, troublesome business resulting from the itching sensation. So an intelligent person rather suffers the pain of itching sensation than accepting the after effect of satisfying the itch. तो itching को टॉलरेट करना एक पेन है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको टॉलरेट करता है, अदरवाइज उसमें इंडल्ज करके सफर करता है. This suffering is a leisure. So the tolerant mind of the mind plug for the sense gratification, उसको टॉलरेंट में कुछ तो तपस्या है, कुछ तो पेन है, उस पेन लेना बेटर है. जब उसमें इंडल्ज करेंगे उससे दुख होगा, वो मल्टीफोल्ड होगा. On the battle of Kurukshetra, Arjuna said to Krishna, this is very nice thing Prabhupada ji बताया. तो अर्जुन बोल रहा है भगवान को, whatever you are saying is all right. I am not this body. But when I see my son is dying or my grandfather is dying, that I am killing, how can I solace simply by knowing that they are not dying, but only their bodies are changing? पर ठीक है भगवान, तुम तो बताए हो शरीर नहीं आत्मा है, बट जब हमारे my son is dying, my grandfather is dying, I am killing. दिमाग में कुछ बैठ नहीं रहा. Now please understand, we know, yes, but something happens to the body. So Arjuna is saying, very difficult. I cannot I cannot solace myself just knowing that they are. So I am accustomed to thinking of them with affection in terms of body. So there must be grief and suffering. Bhagavan Bhadachan, Krishna did not deny what Arjuna said. Krishna said, yes. It is there. It will, because we are in this world is a bodily concept. Like, yes, we cannot come out simply by saying we are not. आप शरीर नहीं आत्मा है. So Krishna did not deny what Arjuna said. Yes, he replied. That's a fact. Because you are in bodily concept of life, there must be suffering by saying that your son and grandfather died. So you must tolerate it. That's all. There is no other remedy. तो भौतिक दुनिया में दुख सुख तो लगा रहेगा, हम टॉलरेट कर रहे. One's greatness has to be estimated by one's ability to tolerate provoking situations. तो हमारा हम कैसे हम टॉलरेट करते हैं वो हमारा डिटरमाइन करेगा कि हम सही बात की. That toleration is very important. And if a devotee becomes too morose, or tolerance does not mean एक होता guilt and एक होता tolerant. दोनों में बहुत अंतर है. Guilt में there's a beautiful quote I read that I will discuss. If a devotee becomes too morose or discouraged in devotional service, he may drift into an impersonal consciousness to give up his devotional service to the Lord. Therefore, the Lord here advises that although one should sincerely repent, he should not become chronically depressed. Now, guilt में क्या आता है कि you move the negative side. Repent means with the logic and reasoning. One should understand that because of his past sins, he must occasionally suffer disturbances from the material mind and senses. So we have to
tolerate, not the guilty. We should always remember that Krishna's sense gratification is never to be compared to the sense gratification. Krishna also enjoying with the gopis and Vrindavan. Krishna enjoyment is not compared to sense gratification material world. As we already explained, Krishna's gratification is just like gold, and perpetual refraction of that sense gratification found in this material world, which is like a iron. Since we must serve, हमको सेवा करनी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, like a typewriter, even if you do the backward as well, like a typewriter. So we must serve. Why not serve Krishna? Why should we serve our senses, which are never satisfied anyway? आप कितना भी उनकी सेवा कर दो उस इंद्रियों की, कभी वो सेटिस्फाई नहीं होगी. आपको सेवा तो करनी है, तो भगवान की सेवा क्यों नहीं करते? Anyway, sense will not satisfy. Even you try to serve life after life, and we have been doing. So we should become servant of God. That is a protection of life. Otherwise, we shall be obliged to become servant of our senses and serve. A father gives education to his son to earning livelihood, gets him married and settles him. But he knows that this kind of business, earning money, marrying and begetting children, I have done, but I am not satisfied. So why I am engaging my sons and daughters in this business? This is called chewing the chew. Chewing the same thing I have done. I have not been satisfied with this business, but I am engaging my sons and daughters also. The real father is he who does not allow his sons to taste the chewing the chew. That is called real father. So he should direct them in the right path so that he can come out. So yes, so as we see in this case of Diti, we will see she will be very much repenting, asking forgiveness from his husband, and then Kashyap Muni, she was very much afraid here. Her Amru may be killed by Lord Shiva because doing the forbidden act. Then further we will be seeing how Kashyap Muni saw his son, and she become happy by hearing that even though the sons will be the demons, but they will be killed by the Lord, and their grandson will be the great Mahabharata. So that by this she solaced herself. So I will stop that. Granthara Srimad Bhagavatam Jagat Goswami Path